And welcome back to Instant Seekh. मेरा नाम है कृष्णा कहर. In this video we will be continuing with our UGC NET Paper 1 PYQ series. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे UGC NET 2024 में आए हुए DI that is Data Interpretation के क्वेश्चंस को. स्पेसिफिकली आपका एग्जाम जो 21 ऑफ अगस्त के दिन जितने भी पेपर्स हुए थे उन सभी पेपर्स के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के हम DI के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. इस क्लास के पीडीएफ्स एंड नोट्स एंड बाकी पीवाईस के नोट्स एंड सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल्स पे ही मिलेंगे. ऑल्सो कॉन्सेप्ट्स के पीडीएफ्स are also available on telegram channel. Okay, so do join the channel as well. Let's start with the question. Okay, हम start करेंगे 21st August shift 1 paper से. Okay, let's see the first question. Okay, so data interpretation में आपका सबसे पहला रूल ये होना चाहिए, you read the question properly. Okay, doesn't matter उसमें matrices मैट्रिक्स कितने हैं. मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि नंबर्स, जैसे यहाँ पे years दिया हुआ है, रुपीज है, राइट, यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. सो सभी को अच्छे से आपको इंटरप्रेट, सी ये टॉपिक का नाम ही वही है. ओके, कि आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है. सो फर्स्ट इज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ब्लाइंडली डू नॉट स्टार्ट सॉल्विंग बाय सीइंग द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The following table shows the percentage distribution of students in MTech Computer Science class who got employment in the areas of hardware, software quality assurance, SQA, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर्स. ओके, एम्प्लॉयमेंट एरिया स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट्स जिन्हें मिली हैं कौन से डोमेन्स में, हार्डवेयर, एसक्यूए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर्स. और ये कितने साल का डेटा है? 5 साल का डेटा हमें दिया गया है. ओके, हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स डेटास आर गिवन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2019 टू 2023 along with the average starting salaries of students per month. Okay, हमें परसेंटेज दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एंड एवरेज मंथली सैलरी. ओके, सो ये है ओके आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया एंड ये है आपका परसेंटेज, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, दैट इज हार्डवेयर. ओके, आपको रीड कैसे करना है कि 2019 में हार्डवेयर में कितने बच्चे प्लेस हुए? 22% ऑफ द स्टूडेंट गेट प्लेस एंड उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी? 54,500. ओके, इस तरीके से आपको रीड करना है. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed out in years 2019 to 2023 were 800, 600, 1100, 1200 and 1000 respectively. Okay, so meaning 2019 में कितने students pass out हुए थे? 800. See, this data is very important because the number of student के ऊपर question हो सकता है आपका आगे. 800, 600, 2020 में कितने students थे? 600. 2021 में आपके कितने students थे? 1100. 2022 में आपके कितने students थे? 1200 and 2023 में आपके कितने स्टूडेंट्स थे? 1000. ओके, सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके परसेंटेज दिए, मीनिंग व्हाट कि 800, लेट्स से आई एम टेकिंग 2019 अगेन. ओके, सो 2019 में टोटल 800 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 22% कहाँ पे एम्प्लॉय हुए? हार्डवेयर डोमेन में एम्प्लॉय. 36% कहाँ एम्प्लॉय हुए? एसक्यूए डोमेन में एम्प्लॉयमेंट हुए. 19% ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे एम्प्लॉय हुए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. ओके, सो इस तरीके से हम डेटा को रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. Okay, our first question. In all 5 years, the number of students getting employment in hardware is less than the number of students getting employment in SQA. Okay, क्वेश्चन को शांति से पहले रीड करना है, समझना है कि क्या पूछा गया है. क्या पूछा गया है कि in all 5 years मतलब 2019 से लेके 23 तक वो पूछ रहा है. Okay, in all 5 years, the number of students getting employment in hardware is how much more than the number of students getting employment in SQA. मतलब जो संख्या बच्चों की है इन 5 सालों में जो हार्डवेयर में प्लेस हुए हैं उनकी संख्या एसक्यूए में जो प्लेस हुए हैं स्टूडेंट्स उनसे कितनी ज्यादा है. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? मेन कंपोनेंट, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें निकालने हैं, हार्डवेयर के एंड एसक्यूए के. क्या हमें इस टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है? नहीं, बट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, राइट. So using this percentage, we will find out the number of students. Okay, what do we have? अभी previous slide में हमने देखा था कि year wise we have the number of students. ये year है, right? And ये number of students है, isn't it? So accordingly we will start. Okay, so हम यहाँ पे लिख देंगे year है हमारे पास. So year 19, 20, 21, 22 and 23. Okay, now for hardware I will write H, for SQA I will write S. Okay, so in hardware in 2019 how many student got placed? 22%. Okay, so 22% is the number. Now here I will create one more column
that will say hardware actual number of students, and software actual number of students. Okay, so this is 22%. Next you can from the table you can take how many 2020 में कितने थे बच्चे हमारे पास 17%, राइट, फिर 21 23%, then 19% and then 32%. सी यहाँ पे दिया गया है, ओके, 23%, 19%, 32%. नाउ एसक्यूए का देख लेते हैं. एसक्यूए में कितने दिए गए हैं? एसक्यूए 36%, ओके, देन 48%, नेक्स्ट 43%, नेक्स्ट 37% and next last 32%. okay, so let's find out the number of student for each year. अब हमें पता है 2019 में कितने students थे? 800, then 600, then 1100, then 1200, then 1000. okay, so let's have the number of student here first of all, year wise. So instead of year I will write the number of students that were there for that particular year. okay, yeah, so I will write the number of student. okay, this is 22 hardware first year. So number of student actually कितने थे हर साल के लिए? फर्स्ट 19 के लिए थे 800, फिर 600, then 1100, then 1200 and then at last it was 1000. okay, so these were the number of students, okay, for respective year. So now what you need to do, simply आपको number of students निकालना है और दोनों के बीच में difference निकालना है. ओके, सो हार्डवेयर के लिए फटाफट निकाल लेते हैं. 22% ऑफ 800 कितना होगा आपका? 22% ऑफ 800 विल बी 176. कितना आ जाएगा आपका? 176. 17% ऑफ 600, 17 6 ओके 102, राइट. देन 23% ऑफ 1100, this will give you 253. next 19% of 1200, this will give you 228, and last 32% of 1000 will give you 320. अब ऐसे ही एसक्यूए का हम निकाल लेंगे परसेंटेज से. एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36% ऑफ 800, दिस विल बी व्हाट? योर 288. नेक्स्ट 48% ऑफ 600, इट विल बी अगेन 288. दिस विल बी 288. ओके, सो नाउ नेक्स्ट 43% ऑफ 1100, 43% ऑफ 1100 विल गिव यू 473. नेक्स्ट 37% ऑफ 1200, ये आपको देगा 444. एंड लास्ट 32% ऑफ 1000, अगेन इट विल गिव यू 320. सी दिस इज 320. ओके, सो अभी आपको क्या करना है? आप इन दोनों को ऐड करके इनका समेशन निकालना है. मीनिंग आई विल बी एडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एम्प्लॉयड इन हार्डवेयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट एम्प्लॉयड इन सॉफ्टवेयर, एंड उनके एडिशन से दोनों का एडिशन करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको. इफ यू ऐड दिस अप, इसका टोटल आपका होगा एसक्यूए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इन एसक्यूए विल बी 18. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 1813. ओके, हार्डवेयर में देख लेते हैं कितने. हार्डवेयर इफ यू डू द टोटलिंग you will get 1079. okay, so what will be the difference? okay, what will be the number of student? okay, question क्या है? The number of student getting employment in hardware is less than how much that are getting employed in software. see, straight away आपको difference दिख रहा है. let's minus this. okay, 1813 minus 1079. okay, if you do the minus, okay, the difference you will be getting is 734. okay, so the number of 734 student is the number that is placed less than the number of student placed in SQA. okay, so your correct answer will be answer number 3, that is 734 will be your correct answer. That is your option number 3. Let's move on to the next. okay, next is what is the percentage increase in the average starting salary per month of employment in hardware in the year 2023 with reference to the year 2019. okay, once again read the question very clearly. क्या पूछा गया है कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज है एवरेज सैलरी में किसके? हार्डवेयर डोमेन में, जो 2019 में हुआ करता था स्टार्टिंग सैलरी, और 2023 में क्या स्टार्टिंग सैलरी हार्डवेयर डोमेन में प्रोवाइड की जा रही है. ओके, सो हार्डवेयर 2019 का स्टार्टिंग का डेटा. ओके, यहाँ पे मैंने कंप्लीट टेबल पेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, सो 2019 में इफ यू सी 2019 में स्टार्टिंग सैलरी क्या था? 54,500 पर मंथ. ओके,
सो 54,500 पर मंथ। 23 में क्या है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, ओके, दैट इज 2023 में हमारे पास क्या है 89,100। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। सो आपको परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके, परसेंटेज इंक्रीज व्हाट इट इज। सो ओके, सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, परसेंटेज इंक्रीज इज ऑलवेज व्हाट, ओके, percentage increase is always what the difference divided by the old value। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस का मतलब क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या है, नई वैल्यू है 2023 की वैल्यू, राइट, कितनी है, ओके 98,100, राइट, 98,100 माइनस ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 54,500। इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे old value से, that is 54,500। okay, so this is how you will do it, right? so once you do this and इसके बाद आपको आंसर आएगा इसका 43,600 divided by 545। okay, if you do this आपका आंसर आएगा 80%। कितना आएगा आंसर आपका 80%। ओके, परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है। सो इसके बाद आप इंटू 100 करोगे, राइट। सो परसेंटेज इंक्रीज का ये क्वेश्चन है। ओके, क्या करना है हमें, ओल्ड न्यू वैल्यू कितनी आई है हमारी, न्यू वैल्यू इज 98,100 माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है 54,500 डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। दिस विल गिव यू योर percentage increase of the salary, or in our case we got 80%। so your option number 4 is your correct answer, that is 80% is the percentage increase in the average starting salary of hardware compared to the year 2019 to 2023। okay, so let's move on to the next question। okay, next, what is the average monthly salary offered to MTech computer science student in 2020। okay, what is the average salary they are asking, that has been ऑफर्ड टू 2020। ओके, हम एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं कि लेट्स से हमारे 5 बच्चे थे, पांचों बच्चे डिफरेंट डोमेन में गए, मीन्स 5 अलग अलग कंपनियों में गए, तो हम हर एक की सैलरी का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ओके, सम अप करके डिवाइड करेंगे। ओके, सो हियर सेम ऑल्सो, यहाँ पे हमारे पास कितने डोमेन है, एम्प्लॉयमेंट एरिया 1 2 3 4। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट जो 2020 वाला ईयर है उसकी सैलरीज को सम अप करके एवरेज निकालना है। ओके, सो इट विल बी 63800 प्लस 63900 प्लस 64400 प्लस 5090। okay, so sorry, so you need to calculate the sum of the salaries to the students given here। okay, once you do this, okay, आपको क्यूमुलेटिव टोटल सैलरी आपका आ जाएगा 0 okay 0342। okay, that will be your 2,43,000। okay, so now सिंपल आप एवरेज का फॉर्मूला लगा दोगे, आपने सम किया हुआ है। सो 243,000 डिवाइडेड बाय कितने डोमेन्स थे, 4, so divided by 4, so this will give you your answer, that is 60,750 will be the average salary that was offered in year 2020 to the computer science student। okay, so your correct answer will be option number 1, that is 60,750 will be your correct answer। okay, let's move to the next। in 2021 the students getting employment in hardware earned dash lakhs more than those getting employment in software development per annum। okay, so now here you need to identify the number of the amounts that were earned by the student, कि student जो hardware में थे वो कितना earn कर रहे थे as compared to the software development में जो students थे। okay, so first of all इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 2021 में कितने number of students थे। so 2021 में हमारे पास कितने students थे, okay, हमारे पास students थे 1100 और 1100, right, or yes, in for our case here 2021 we had 1100 students, right, so first we will write that number of students were 1100। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए, दैट इज फॉर हार्डवेयर
and for software development. You need to find the number of student and what they were earning. Okay, development, software development. Okay, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे कैसे मिलेंगे? हार्डवेयर के लिए कितने थे? 23, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 21. So simply what you will do, 23% for hardware, you will do 23% of what? 1100. इससे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 21% ऑफ 1100. 21% ऑफ 1100, राइट? ओके, सो इसको आपको सॉल्व करना है. सो नाउ नेक्स्ट, yeah, so once you calculate this, what you will be getting? For this 23% of 1100, you will be getting 253, right? And for 21% of 1100, you will be getting what? 231, right? So in year 2021, so yeah, in year 2021, okay, कितने स्टूडेंट्स थे? 253 स्टूडेंट्स थे जो कितनी सैलरी ले रहे थे? 75,500. ओके, 253 स्टूडेंट्स, okay, 253 students were taking the salary of what? 75,500. So वो total कितना income ले रहे थे monthly? Okay, so total they were getting what? We straightly you need to just multiply. So they were getting 253 into 75,500, right? And software development, how much they are getting? 231 into what was the salary? 70,500. Okay, so straight away you will be multiplying 70,500 here. Okay, right? So आप इन दोनों का आपको कैलकुलेशन निकालना है कि टोटल सैलरी कितनी विड्रॉन थी, टोटल हाउ मच सैलरी दे वर विड्रॉइंग. ओके, सो 253 into 75,500 will give you 19,101,500. Okay, and the other, that is 231 into 70,500 will give you what? 16,285,500. अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है. ओके, सो स्टार्ट विद द डिफरेंस. 19,101,500 माइनस 16,285,500. ओके, इसका आपका आंसर आ जाएगा 2816,000. 2816,000. अभी आपका सोल्यूशन आया नहीं है. ये तो पर मंथ का डिफरेंस है. कितना है ये? पर मंथ का डिफरेंस है. इसे हमें 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा गया है? पर एनम पूछा गया है. ओके, सो 2816,000 इंटू 12 करना है. कितना करना है आपको? इंटू 12. इफ यू डू दिस you will get 33,792,000. Okay, 33,792,000. That is your 337.92 lakhs. 337.92 lakhs where the student in hardware earning more than the student in software development. Okay, so इस क्वेश्चन को इस तरीके से you need to solve. So your correct answer will be option number 2, that is 337.92 lakhs was the difference between the two domains the students were earning. Okay, option number 2 is your correct answer. Let's move on to the next. Okay, the average monthly salary, next question we have is the average monthly salary that was offered to a MTech computer science computer science student in 2023 is approximately -% more than that in 2022. Okay, again क्या पूछा गया है? Average monthly salary offered to computer science student in 2023 is approximately more than that in 2022. मतलब कि जो एवरेज सैलरी थी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट की 2023 में, वो कितनी ज्यादा है एवरेज सैलरी जो ऑफर होती थी 2022 में. ओके, मतलब क्या निकालना है हमें? इंक्रीज का डिफरेंस निकालना है. अगेन क्या पूछा गया कि 2023 में जो सैलरी एवरेज सैलरी मिल रही है, ओके, एवरेज सैलरी जो मिल रही है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, वो कितनी ज़्यादा है
2020 में जो एवरेज सैलरी है उससे, राइट। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो उसके पहले हमें क्या चाहिए होगा कि 2023 में एवरेज सैलरी कितनी है और 2022 में एवरेज सैलरी कितनी है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो अगेन आपको 2022 का एंड 2023 का सम निकालना होगा। ओके, यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू नीड टू सम दिस 2022 के एवरेज सैलरी। ओके, सो यू नीड टू ऐड 89200। ओके, 89200 प्लस 89600 प्लस 77600 प्लस 66400. Okay, so if you add this you will get 322800. Okay, अब 2023 का आपको एडिशन निकालना है। ओके, सो अगेन 98,100, right? Then your 1 lakh, you have 1,22,000, right? Then 86,400, right? And then last 75,400. Okay, so if you calculate this you will get the sum as 362,100. Okay, now you have the average salary here. Kitni average salary? How much the average salary? For average salary you need to divide it by 4, right? Isn't it? So let's divide the monthly salary. So divided by 4 again, divided by 4. So if you divide 362 by 4, okay, you will get 90,525. So average salary in 2023 is 90,525. Let's calculate for year 2022. That is your 322,800 divided by 4. So this will give you average salary as 80,700. 80,700. So 5 to 5 this is, and here 80,700, right? So अभी क्या करना है, अब आपको पता है हमें क्या निकालना है। ओके, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करना है। सो दिस इज न्यू वैल्यू, दिस इज ओल्ड वैल्यू। हमने पीछे देखा ही है क्या फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, दैट इज योर 90,525 minus old value 80,700 divided by old value, that is 80,700 into 100 into your 100, because हमें वैल्यू किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। ओके, सो 90,525 minus 80,700, okay, divided by 80,700 will into this will give you 0.12174. okay, and if you multiply it by 100, percentage में चाहिए हमें value, right? So it will be 12.17%. okay, so your correct answer, your percentage increase in the monthly salary of computer science student that they were getting in 2022, now in 2023 as compared to, there is a 12.17% increase. That is option number 1. 12.17 is your correct answer for this particular question. Okay, let's move on to the next. Okay, now we will take 21st August shift 2 questions, DI questions. Okay, let's see. Okay, again जैसा मैंने कहा, फर्स्ट आप डेटा को समझोगे कि क्या डेटा दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी दिस। ओके, क्वेश्चन, द फॉलोइंग table shows the total exports in rupees crore of 6 countries A to F over the 5 years. क्या दिया गया है, टोटल एक्सपोर्ट्स का डेटा दिया गया है, कितनी कंट्रीज का, 6 कंट्रीज का, कितने साल का डेटा है, 5 years का डेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 to 2023. Based on the data in the table, answer the questions that follow. Okay, डेटा दिया गया हुआ है, कितने कंट्रीज का डेटा है, 6 कंट्रीज का डेटा है over the span of what, 5 years. Okay, so this you need to remember. Okay, table accordingly we will be having for each question. Okay, so no need to worry about that. Okay, let's start with our questions. First of all, yeah, so first question क्या दिया गया है, what was the income of all 6 countries together in the year 2023 if the total imports of all these countries together was 770 crore in the same year. Okay, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, what was the income of all the 6 countries
इन ईयर 2023, किस ईयर के लिए पूछा गया है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, किस ईयर के लिए पूछा गया है? 2023 के लिए पूछा गया है कि अगर इनके कंबाइंड इंपोर्ट थे 770, सो इनका इनकम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके, कि टोटल इनकम होता क्या है। ओके, इनकम, योर इनकम इज नथिंग बट, योर इनकम इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज योर इनकम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज योर इनकम। ओके, सो ये आपको याद होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है मींस इन जनरल ये फॉर्मूला है कि आपका इनकम क्या होता है, जितना आप एक्सपोर्ट करते हो, ओके, एक्सपोर्ट करते हो और जितना आप इंपोर्ट करते हो, ओके, एक्सपोर्ट माइनस आप कितना इंपोर्ट करते हो, ओके, वो आपका इनकम बन जाता है। सो इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2023 में, 2023 के लिए क्या इनकम है, ओके, और जब अगर उनका कंबाइन 6 कंट्रीज का एक्सपोर्ट चाहिए होगा हमें, ओके, 2023 में कंबाइन एक्सपोर्ट चाहिए होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2023 का एक्सपोर्ट निकालना होगा सभी कंट्रीज का कंबाइन। इंपोर्ट हमें दिया गया है कंबाइन कितना है, 770 करोड़, राइट। सो कंबाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडिशन। सो वी नीड टू डू द समेशन ऑफ 2023, ओके। सो 180 प्लस 200 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 240, इन सभी का सम जो एक्सपोर्ट आएगा माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट कितना दिया हुआ है, 770, दैट विल बी अवर इनकम। ओके, सो इफ यू ऐड ऑल दिस अप यू विल गेट 1020। ओके, आपका टोटल एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, 1020, एंड इसमें से आपको इंपोर्ट माइनस करना है, दैट इज 770। सो आफ्टर यू डू दिस, माइनस करने के बाद, ओके, यू विल बी गेटिंग 250 करोड़, 250 या 250 crores, that is your first option will be your correct answer, that is 250 crores will be the combined income of 6 countries in the year 2023. Okay, so your option 1 will be your correct answer for this particular question. Okay, let's move on to the next. Okay, next, in year 2019, if the ratio of exports to import of country D and country F are 1:2 and 4:1, then respectively, then what is the total import of countries F and D together in the same year? Okay, क्या पूछा गया है कि रेशियो, ओके, दो कंट्रीज का, कंट्री डी का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो, व्हाट इट इज सेइंग, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो क्या है, 1:2 है, 1:2 है। और कंट्री एफ का क्या है, कंट्री एफ का भी एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है। ओके, नाउ हाउ टू डू दिस, और क्या पूछा गया है, टोटल, देन व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ दोस कंट्रीज, हमें पता है, राइट, कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। सो अकॉर्डिंगली बाय दैट वी विल गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आपको इनकम की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इस पे ध्यान दो, क्या बोला गया है, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो क्या है, 1:2। तो मतलब क्या है कि अगर कंट्री डी, उसका एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो कितना है, 1:2, मीनिंग अगर वो एक टाइम अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो दो चीजें वो इंपोर्ट कर रहा है। स्ट्रेट अवे सीधा सिंपल यही है कि अगर वो एक चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो दो चीज वो इंपोर्ट कर रहा है। वेयर कंट्री एफ के लिए क्या सिनेरियो है, E:I का रेशियो क्या है, एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट का रेशियो, कि अगर वो 4 चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही चीज इंपोर्ट कर रहा है, राइट। और किस ईयर की बात चल रही है, ये चल रही है बात ईयर 2019 की, राइट। हमारे पास एक्सपोर्ट का वैल्यू है, कंट्री डी के लिए एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 90, राइट। एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 90। क्या पूछा गया है, फिर इंपोर्ट कितना होगा, सो रेशियो हमारे पास है, राइट। सो रेशियो के हिसाब से क्या कहा गया है कि डी कंट्री एक्सपोर्ट अगर एक चीज कर रही है तो इंपोर्ट दो चीज करेगी। सो मीनिंग व्हाट, स्ट्रेट अवे यू कैन ईदर यूज 1/2, okay, or you can simply 90 into 2, straight away you can multiply the ratio 90 into 2, that will give you import will be 180, import will be 180 for which, for country D, for country D। अब देख लेते हैं कंट्री एफ का क्या दिया गया है, 48, कंट्री एफ का एक्सपोर्ट दिया गया है 48। जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कंट्री एफ 4 चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एक ही चीज इंपोर्ट करेगा। सो आपको यहाँ पे डिवाइड करना, 4:1 का रेशियो, राइट। So 12 4s are 48, right? So import will be 12,
import will be 12 और straight away आप यहाँ पे if you this is the simplest method instead of doing calculation आप सीधा आप देख के ही बता सकते हो कि अगर 90 1:2 का रेशियो है तो एक्सपोर्ट अगर 1 है इंपोर्ट अगर ट्वाइस है तो स्ट्रेट अवे 90 का क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेशियो 4:1 सो एक्सपोर्ट वाज 48 तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा 12 4 48 सो इंपोर्ट विल बी 12। अब हमें पूछा क्या गया है व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री एफ एंड डी। सो टोटल इंपोर्ट कितना हो जाएगा 180 राइट। टोटल इंपोर्ट विल बी 180 प्लस 12 सो your total import will be 192 crores, that is your option number 3 will be your correct answer. Okay, understood? So this is how you will solve this question. Let's move on to the next question. Okay, so next question we have, if the export of a country A in the year 2024 is 20% more than the combined export of country B in 2020 and the export of country E in 2020 together, then what is the income of country A in crore in the year 2024 if its import is 184 करोड़। ओके कुछ दिया गया हुआ है एक्सपोर्ट के बारे में, कुछ चीजें कही गई है कंट्री ए का। ओके सो क्या कहा गया है यहाँ पे कंट्री फॉर कंट्री ए इन 2024 एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट है ए कंट्री का दैट इज व्हाट ट्वाइस ऑफ व्हाट एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी एंड in 2020 export of country B in 2020 right plus export of country E in 2021 right। वो क्या बोला गया है कि एक्सपोर्ट जो है ए का कौन से ईयर के लिए 2024 के लिए it is equal to what, it is equal to the combined export of country B in 2022 okay and combined export of E in 2021 okay, it is more than 20%, 2 नहीं 20% okay, sorry here it will be 20% okay, so meaning what, ये हो जाएगा आपका 20% more, that is 20% into export of country B in 2022 okay, so B का export 2022 में कितना है 100, so हम 100 लिख देंगे right, then export of country in E in 2021 में E का कितना export है okay, E का export है 110, it is 110, so straight away if you solve this you will get 20% into 210 okay, and 20% of 210 is nothing but your 42 okay। अब तो ये निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया हमने एक्सपोर्ट राइट, ये क्या निकाल दिया हमने एक्सपोर्ट, सो 20% मोर देन द कंबाइंड 20% मोर, अब ये कंबाइंड निकाला है हमने 42 निकाला है, इसका 20% हो गया, अब इसको ऐड करेंगे हम 10 में बिकॉज क्या बोला गया है 20% मोर है कंबाइन करके ओके, सो 42 ये 20% निकला 2010 का कंबाइन 210 ओके, सो टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ 252 राइट, सो दिस विल बी द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन 2024। अब क्या पूछा गया है, एक्चुअली पूछा गया है इनकम पूछा गया है, सो अभी हमें सिंपल फॉर्मूला पता है राइट, इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट राइट, इंपोर्ट हमारे पास दिया गया हुआ है, इंपोर्ट हमारे पास दिया गया हुआ है कितना है इंपोर्ट राइट 184 है, एक्सपोर्ट हमने निकाल लिया है, एक्सपोर्ट कितना है 252 राइट, सो स्ट्रेट अवे यू विल माइनस दिस ओके 252 minus 184 you will get 68 crores as the income, 68 crore will be the income of country A in 2024, that is your option number 4 will be your correct answer for this particular question okay। once again I am repeating हमने क्या किया okay, year 2024 के लिए okay, क्या बोला गया है 20% the export of country A in 2024 is 20% more than the combined export of country B in 2022 and country E in 2021 okay, so B country का export in 2022 में कितना था 100, E का कितना था 2021 में export 110, दोनों को ऐड किया गया 20% कितना निकला 42, अब ये 20% को हमने कंबाइन कर दिया एक्चुअल वैल्यू के साथ दैट इज द कंबाइंड एक्सपोर्ट के साथ, सो 20% मोर मींस इट विल गेट total 252 okay, so once you get the export straight away you will minus with the import that was given in the question 184 and you will get your answer of the income of country A, that is 68 crore, that is your option number 4 is your correct answer for this particular question okay। Let's move to the next okay,
So next question we have, for overall the given years, the average export of country E is dash percentage more than the average export of country C. Okay, so average export of country E overall for all the given years. Okay, so हमें क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना है, एंड इट इज व्हाट मोर, हाउ मच मोर इट इज, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज है देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ सी, देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ सी. Okay, so for E we will calculate the average first of all. So what are the values? 2019 it has 120, okay, then 100, then 10, 110, 200, and then 220 divided by 5. Okay, divided by 5. So let's calculate this. Okay, and 120 plus 100, 220 plus 110, 330 plus 200, 530 plus 220. This will give you 750. 750 divided by 5, divided by 5. Okay, so your average export of country A will come 150. Now let's see for country C. Okay, so कितना है, 100 plus 110 plus 140 plus 180 plus 130 divided by 5, divided by 5. So your 100, 110 plus 140 plus 180, 180 plus 130. Okay, so if you do this you will get 660 divided by 5, and this will be your 132. Okay, now you have new value, you have old value. See क्या पूछा गया है, परसेंटेज मोर, मतलब क्या पूछा गया है, परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज का, जो हमने सॉल्व किया है. ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू. सो व्हाट इज द न्यू वैल्यू हियर, it is 150 minus old value is 132 divided by 132. Okay, so if you do this, 150 minus 132, okay, and divided by 132. so fractions में दिया गया है तो fractions में ही लिखेंगे. so 150 minus 132, you will get 18 divided by 132. Okay, so if you solve this, say for the fraction, so 13, okay, 13 11 za, okay, and if you solve this you will be getting 13 7 by 11, 13 7 by 11 in the form of fraction. Okay, you can as a decimal you can also represent 0 point something, but since the question is given in answers, options are given in fraction form, your correct answer will be of option number 1, that is 13:7 by 11. Okay, so answer number 1 will be your correct answer for this particular question. Okay, so let's move on to the next what we have, what is the approximate percentage increase in the export of all the countries together in the year 2022 in comparison to the year 2020. अगेन किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन है. ओके, सो हमें क्या निकालना है, पहले एवरेज. आप क्या निकालोगे, सभी एक्सपोर्ट्स का क्या निकालोगे, आप समेशन निकालोगे, क्या निकालोगे, सम. ओके, सो इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2022 एज कम्पेयर टू 2020. ओके, तो 2022 के लिए हम क्या निकाल लेंगे, समेशन निकाल लेंगे. सो इट इज 90 प्लस 100, 90 plus 100 plus 180 plus 30 plus 200 plus 150. Okay, so add this up, 90 plus 100 190, right, plus 180 370 plus 30 400 plus 200 plus 150. ओके, सो ये आ जाएगा आपका 750. कितना आएगा आपका 750. लेट्स कैलकुलेट फॉर ईयर 2020. सो इट इज व्हाट, फॉर 2020 ईयर 80 प्लस 50 प्लस 110, 80 प्लस 50 प्लस 110 प्लस
120 plus 100 plus 80. Okay, so let's add this all up and you will get your value 540 for year 2020. Okay, now you know the percentage increase formula. क्या करना है? New value minus old value. Okay, so your new value is what? New value is 750 minus 540 divided by 540 into 100. Okay, so let's calculate this. 750 minus 750 minus 540, this will give you 210. This will give you 210 divided by 540 into 100 into 100. So if you calculate this, 210 divided by 540, okay, into 100, this will give you 38.888. That is your 38. That is your value will be 38.888. That is 38.89 will be your correct answer. You can mark 38.89 as your correct answer for this particular question. That is option number 3 will be your correct answer for this particular question. Okay, as you can see, the only thing you need to be very clear during the data interpretation questions, see खासकर data interpretations में ही इधर ये starting में दिया गया होता है एंड स्टार्टिंग में ही आप कैलकुलेशंस या नंबर्स में इतने अगर आपका क्लियर नहीं है कैलकुलेशन वाइज कॉन्सेप्ट या क्या आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, सो आप नंबर कैलकुलेशंस में ही एंगेज रह जाओगे, क्वेश्चंस आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा एंड डीआई स्टार्टिंग में इसीलिए रखा गया होता है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो. ओके, टू मेक योर क्वेश्चन पेपर लेंदी. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू रीड योर डेटा वेरी केयरफुली. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट. Okay, so we have solved 21st August subject papers data interpretation question both from shift 1 and shift 2 as well. Okay, if you found this explanation useful, do like this particular video, share with your friends and colleagues those are preparing for UGC NET examination or other set examinations as well. Okay, keep following the channel. Do follow our social media handles, whether it is Instagram, WhatsApp, and must follow the Telegram channel because whatever the notes are there that will be uploaded on the Telegram channel itself. So make sure to follow those. Okay, and make sure to subscribe to the Instant Seekh channel. Okay, thank you and Jai Hind.